recent months, ever since there was a change of government both in the center and in the state, we have seen the rise of the forces of intolerance and the voices which are less than civilized and are creating social tensions and conflict. It becomes the responsibility of the government to ensure that India's image is not further mauled. Already the country is getting a bad name for what has happened in various states. This is yet another incident. Though the right to protest remains, the protests have to be civilized. You cannot accept a situation where the protests actually cross that Lakshman Rekha. We are generally concerned when it comes to the overall situation in the country. People are being told by forces as to how they should conduct themselves. The freedom of speech, the freedom to write, the freedom to express, as we have said, is being suppressed. And this has assumed a dimension which has raised concerns nationally and globally. It is therefore high time that India stands up and in one voice condemns these forces which the present government tacitly encourages by long silence. Whatever the Prime Minister has said on these issues, weeks after the lynching in Bisara, has been because of the global pressure, the national pressure. It is not a statement which had any sincerity, as we have said in the past. हमें आज बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ये कहा है कि उनका एजेंडा विकास का है और वो कभी भी इन बातों को बढ़ावा नहीं देते कि लोग क्या खाएं, उनकी पोशाक क्या हो, उनका व्यवहार क्या हो। ये सही माने में पाखंड है। ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, पदाधिकारी और संघ परिवार से जुड़े हुए संगठन खुशी हैं या जिम्मेवार हैं इस तरह का वातावरण समाज में पैदा करने के लिए, जिससे विकास पीछे हटा है, तनाव और टकराव बढ़ गया है। भारत की छवि धूमिल हुई है पूरे विश्व के अंदर। एक प्रश्न चिन्ह लग गया है हमारे संवैधानिक प्रजातंत्र की विश्वसनीयता पर। हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि केवल ऐसे बयानों से कोई भी दुरुस्तगी इसमें आएगी या स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या उनका दल कोई काम करेगा। ये याद कराना ज़रूरी है। भारत के अंदर सबसे पहले इस विषय को उठाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मोर्चा निकाला था। उन्होंने ये कहा था गुजरात के चुनाव के समय, जिसको उन्होंने बार बार दोहराया लोकसभा चुनाव में, उन चुनाव क्षेत्रों के अंदर जहां पर किसी एक समुदाय का बाहुल्य था, मेजॉरिटी थी, जो गाय का पालन करते हैं, दूध का कारोबार करते हैं। पिंक रेवोल्यूशन शब्द कौन लाया था? नरेंद्र मोदी, बीजेपी। उस समय हमने, भारत की सरकार ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि आप ये बात गलत कर रहे हैं। मैंने स्वयं उन्हें 2 बार पत्र लिखे थे भारत के वाणिज्य मंत्री के रूप में कि आपका ये कथन और आपका ये आरोप कि भारत में गाय कटती है और गाय का निर्यात होता है बिल्कुल गलत है और आप इस बयान को बंद करें। पर उन्होंने ये बयान राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए बार बार दोहराया और आज देश में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिससे स्वयं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। ये स्पष्टीकरण अपने आप में पूरक नहीं है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को अपने
कथन की और इस तरह के प्रचार की जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए और देश और समाज से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए जो नुकसान उन्होंने किया है इस तरह के प्रचार के माध्यम से। Yesterday, the finance minister has, through a blog, made a statement which is unfortunate, deplorable, and smacks of arrogance of a government which is authoritarian in its approach and disrespectful of established institutions. The finance minister, he has been a law minister earlier, understands the law and the constitution very well to understand that when one particular law enacted by the parliament in its wisdom and the constitutional amendment has been held as unconstitutional by a constitution bench of the Supreme Court, then the status quo ante is restored. The Supreme Court is not supposed then to wait for the legislature to enact a new law. The stalemate that has been there when this matter has been pending adjudication has already caused the deliverance of justice much more. When you look at the number of vacancies that have not been filled, the pendency of the cases before the courts, and it's the litigants, the poor people who are seeking justice who are suffering. We had advised the government after the judgment that the concerns which were there, which were discussed among the political parties, those have been taken cognizance of by the Supreme Court Constitution Bench with regard to the collegium system, and the judgment itself has said that the grey areas will be addressed, and the Supreme Court has called for a hearing of the matter to ensure that there is transparency and the desired corrections or correctives are invoked. Thereafter, such a statement coming from the government makes it abundantly clear that the government's intent is not to reform judiciary, but to control judiciary, to reprimand judiciary. It's a government which does not believe in the independent functioning of the institutions. We have said earlier, and we reiterate, that the constitutional scheme of things provides for a separation of powers between the executive, the legislature, and the judiciary, and there is an inbuilt system of checks and balances which cannot be tampered with. Equally important it is for us to convey that last 16 months this country has seen a systematic assault on the autonomy of the institutions, rewriting of the rules, trying to impose a particular ideology and philosophy on all the people of India who do not subscribe to what the BJP and its parent organization, which controls and guides the BJP, the RSS, stands for. Equally concerning for us has been that there has been an assault on the constitutional guarantees and the fundamental rights of the citizens. Therefore, it is an imperative today that India has a judiciary which asserts the rule of law and protects the constitutional guarantees and the rights for all the citizens of this country. Congress Party has made it very clear that in the light of the change situation, we have urged the government, advised the government not to embark on a path of confrontation which will not be healthy for Indian democracy, but to gracefully accept and correct its own ways and its own functioning. Finance Minister, instead of giving unsolicited wisdom to the Supreme Court, which actually is insulting the highest judiciary, he should have been cautious
he should focus more on his present responsibilities as India's finance minister, because India's economy is in a very sad state. It is a sputtering economy with rising debt, loss of jobs, and the fall in India's exports have assumed alarming proportions. For 10 continuous months, the exports of this country are falling, and the government is saying all is well. According to Prime Minister, he and his government have brought about a revolutionary transformation. He has only given pain, misery, and a shock to the people of India. Finance Minister and the government should also answer for why India has become more indebted a nation. They should also apologize and withdraw their claim that prices have come down because average kitchen budget during the last 16 months has more than doubled. तो वित्त मंत्री का कल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो अपनी बुद्धिमत्ता उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को दी है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार जो संविधान के तहत संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार रखती हैं, उससे ये सहमत नहीं है, उसको ये सहन नहीं कर सकते, और वो अपनी बात देश पर और सब संस्थाओं पर थोपना चाहते हैं। हमारे संविधान में ये स्पष्ट है कि न्यायपालिका, सरकार और संसद का अलग अलग जिम्मेवारी है, और इसीलिए जिसको हम सेपरेशन कहते हैं, ताकि हर संस्था अपना कार्य सुचारू रूप से करे, पर जो न्यायपालिका की जिम्मेवारी है वो उसको करे। सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ है जिसने ये सारा मामला सुना है एनजेएसी के, और उस पीठ ने अपना निर्णय दिया है। हमने सरकार को सलाह दी थी कि इसको स्वीकार करे, जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है उसको सुने। उच्चतम न्यायालय ने भी संसद के और राजनीतिक नेतृत्व की चिंता को सुना है, उसको रजिस्टर किया है, विशेष तौर पे कोलिजियम सिस्टम के बारे में, और ये आश्वस्त किया है कि उसमें सुधार लाया जाएगा, पारदर्शिता लाई जाएगी। वित्त मंत्री का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट एक तीसरा चैम्बर संसद का बन रही है, लेजिस्लेचर का, बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर कोई निर्णय, कोई भी कानून, कोई संसदीय ये हमारा जो संशोधन है संविधान का, अगर उसको संविधान के स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जाता, उसको असंवैधानिक कहा जाता है, तो जो पहले का प्रणाली है वो अपने आप वापस लौट जाती है। यही एक परंपरा है जहाँ तक कानून की बात है और संविधान की बात है। बेहतर होगा कि भारत के वित्त मंत्री, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, संविधान समझते हैं, ऐसी बातें जो टकराव की तरफ ले जाती हैं उनको छोड़कर देश की जो आज वित्तीय हालत है उसकी तरफ थोड़ा गौर फरमाएं। कीमतें बढ़ रही हैं, देश का कर्जा बढ़ रहा है, नौकरी टूट रही है, निर्यात 10 महीने से निरंतर गिर रहा है। अगर तेल की कीमतें दुनिया के बाजार में गिरी ना होती तो जितना एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई है 10 महीने में, और जो बढ़ने की जगह निरंतर घट रहा है, उससे भारत की इकोनॉमी आईसीयू में पहुंच गई होती। आज ये चिंता के विषय हैं। हर घर में, चाहे शहर में या गांव में, लोगों को 2 वक्त की दाल रोटी के बारे में चिंता है। ये सरकार अपना कार्य करने में पूरी तरह से विफल रही है। हमारा इनसे यही आग्रह है कि ये वातावरण जो देश में बना रहे हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए अब उससे थोड़ा हट के जिस काम के लिए वोट लिया था
वायदे तो पूरे नहीं किए, तो थोड़ा शासन में सुधार लाएं ताकि देश की दशा और खराब होने से बचे।